Hello everyone, myself Stage Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Stage Kalra. And dear students, today we will discuss about electron gain enthalpy, which is also called electron affinity, of chapter 3 classification of elements and periodicity in properties of class +1. So first of all, what is electron gain enthalpy? As the name indicates, electron gain, it means we have to add one electron, and the electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom. So what is electron gain enthalpy? It is the amount of energy released when an extra electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom. It means we are having an isolated gaseous atom. We will add one extra electron in the outermost shell, and in that case energy is released, and that energy is known as the electron gain enthalpy, and it is represented by EZE, or it is also called represented delta H EZ. For example, we are having H gaseous atom, isolated gaseous atom. We are adding one electron. Then this electron will add into the outermost shell and it will convert into the H negative gases. And in this case, we are adding the first electron. So similar to ionization energy, this is called delta H EZ1, यानी कि first electron gain enthalpy. Same way से H negative gases है, हमने उसमें one electron add किया. Then it will convert into H minus 2 gases. So as we are adding the second electron, so second electron gain enthalpy, H minus 2 gases, one electron addition, convert into H minus 3 gases, third electron gain enthalpy. So these are called the successive electron gain enthalpy. Now, the electron gain enthalpy, it is directly proportional to strength of forces of attraction between nucleus एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कि न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो हम आउटरमोस्ट शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कैसी है. यदि वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाई होगी, और यदि फोर्सेस वीक है तो एनर्जी कम रिलीज होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, लो होगी. अब बात आती है हमारे पास वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वेरिएशन फर्स्टली है डाउन द ग्रुप. याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है it is inversely proportional to atomic radius, and as you move down the group atomic radius always increase. atomic radius बढ़ेगा तो क्या होगा, the distance between center of nucleus and outermost shell will increase, and due to this the forces of attraction between nucleus and incoming electron, that force will become weaker. और यदि वो फोर्स वीक होंगी then less amount of energy is released during the addition of one electron in the outermost shell of an isolated gaseous atom. It means electron gain enthalpy will decrease. Next है across the period. ये पूरा चैप्टर जो है एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड कर रहा है. And as you move across the period from left to right, the number of shell remains same, but atomic number of protons and nuclear charge will increase. Due to this, the distance between center of nucleus and outermost shell, that distance will decrease. और distance decrease होगा तो क्या होगा, the forces of attraction between nucleus and incoming electron, that will become stronger. ये forces strong होती जाएंगी and more amount of energy is released during the addition of one electron in the outermost shell of isolated gaseous atom. It means electron gain enthalpy will increase. So ध्यान रखिएगा ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज और पीरियड के अंदर क्या होगा, इंक्रीज. दिस इज अबाउट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी. Now there are three questions related to electron enthalpy. The first question is,
why halogens or group 17 elements have maximum नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। जितने भी हेलोजेंस है ग्रुप 17 एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they have maximum negative value of electron enthalpy. Why? We know halogens or group 17 elements. कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। They have NS2 NP5 as their general outermost shell electronic configuration. इन सब की जनरल outermost shell electron configuration क्या है? NS2 NP5. They have 7 electron in their outermost shell and they have shortage of one electron. किस चीज के लिए शॉर्टेज है? टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सो इनके पास नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, और जिस समय इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन के प्रति फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। So they have shortage of only one electron to achieve nearest noble gas configuration. So in this case, the forces of attraction between nucleus and incoming electron, this will be very strong. Strong gas forces, and large amount of energy is released during the addition of one electron in the outermost shell of these gaseous atom, these isolated gaseous atom, and therefore electron gain enthalpy will be highest. So they will have the electron gain enthalpy value will be highest, और हम जानते हैं एनर्जी क्या है यहां रिलीज, इसलिए वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. सो दैट्स व्हाई दे विल हैव मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई noble gases or group 18 elements have positive value of electron gain enthalpy. जितनी भी noble gases हैं या group 18 elements हैं, they will have the positive value of electron gain enthalpy. Why? We know noble gases. There are also group 18 elements. कौन कौन से noble gases हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon, radon. They all will have NS2 NP6 general outermost shell electron configuration, except in case of helium where it is NS2. ठीक है, हीलियम में NS2 है, बाकी सब में क्या है? NS2 NP6 है. They have fully filled electronic configuration. अब इनकी कॉन्फिगरेशन कैसे है? फुली फिल्ड. इट मींस देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. दे हैव नो टेंडेंसी टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास स्पेस ही नहीं है उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए. दे हैव नो टेंडेंसी टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. सो इन दिस केस इफ यू हैव टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, देन इन दैट केस एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो एनर्जी रिलीज होने के लिए क्या होगा? एनर्जी इज रिक्वायर्ड for the addition of electron. और जब एनर्जी रिक्वायर्ड है सो वैल्यू कैसे होगी? पॉजिटिव. सो देयरफॉर दे विल हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. लास्ट क्वेश्चन. Question number 3, very important question. Why electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine? और सिमिलर क्वेश्चन ऑक्सीजन than that of सल्फर के लिए भी आता है कि why electron gain enthalpy of oxygen is less negative than that of sulfur.
Now, fluorine and chlorine, they belong to group 17, and oxygen sulfur, they belong to group 16. So, group 16, oxygen sulfur, group 17, फ्लोरीन क्लोरीन. अब जब हम वेरिएशन की बात करें तो ऑक्सीजन से सल्फर जा रहा है, इट मींस वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, तो डिस्टेंस ऑफ बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड outermost shell, that distance will increase, and forces of attraction between nucleus and incoming electron, that will decrease, that will become weak. तो वीक होंगी तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप. यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए सल्फर से, इसी तरह फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से. बट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सल्फर से लेस नेगेटिव है, और इसी तरह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन से लेस नेगेटिव है. व्हाई? If we see the electron configuration, we know atomic number of oxygen is 8, 16, configuration is 2, 6, 2, 8, 6, ऐसे यहाँ 9, 17, 2, 7, 2, 8, 7. So we see that fluorine is having lesser size than that of chlorine, as well as oxygen is having smaller size than that of sulfur. So फ्लोरीन और सल्फर, सॉरी, हम फ्लोरीन क्लोरीन के साथ से बताते हैं. क्या होगा, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन than that of chlorine, the incoming electron will feel inter-electronic repulsions by the electrons already present in inner shells. सो होगा कि यहाँ पर फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, और फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने की वजह से जैसे ही हम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डालेंगे आउटरमोस्ट शेल में, देन इट दिस इलेक्ट्रॉन विल फील इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इनर शेल्स. वो जो अंदर शेल्स में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनके द्वारा रिपल्शंस फील करेगा इनर शेल्स एज वेल एज आउटरमोस्ट शेल. ये आउटरमोस्ट शेल, सॉरी, ये कहेंगे द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल फील रिपल्शन बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल. ठीक है. अब रिपल्शन फील करेगा तो क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो जाएंगे, वीक. देयरफॉर की जब ये कहेंगे एज ए रिजल्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बिकम वीकर इन केस ऑफ फ्लोरीन. और जब इनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगी, देन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी is released during addition of one extra electron in outermost shell in case of fluorine. सो फ्लोरीन के केस में वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में ऐड करते समय क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और यदि एनर्जी लेस रिलीज होगी तो वैल्यू क्या होगी, लेस नेगेटिव. एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन. सेम रीजन हमारे पास किसके लिए आएगा, ऑक्सीजन सल्फर के लिए. तो वी से that the size of oxygen is smaller than that of sulfur, and due to the smaller size of oxygen, the incoming electron will feel inter-electron repulsions by the electrons already present in the outermost shell, and due to this, the forces of attraction between nucleus and incoming electron will become weaker in case of oxygen, and less amount of energy is released during addition of one extra electron in outermost shell in case of oxygen, and therefore electron enthalpy of oxygen is less negative than that of sulfur. So these are three questions related to electron gain enthalpy, and this is all about electron gain enthalpy. Our next topic is electronegativity. So what is electronegativity? The tendency of an atom
to attract shared pair of electrons towards itself is called electronegativity of that atom. For example, we know about the covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड है क्या? द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. सपोज कीजिए जैसे हमारे पास कहीं दिस इज ए एटम, दिस इज बी एटम. ए एटम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने 1 दिया, दोनों ने बीच में शेयर कर दिया. ठीक है. अब इससे क्या बना है? ए सिंगल बॉन्ड विद दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड. इफ आई से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि मैं कहता हूं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, इट मींस ए के अंदर क्या होगा? टेंडेंसी होगी कि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाए. तो होगा क्या यहां पर? ये ए है, ये भी है. दिस इज द शेयर रीजन, दिस रीजन इज द शेयर रीजन. ये जो है हमारे पास सारा. तो होगा कि यहां पर जो यहां पर सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन है वो ए की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि ए की तरफ ये 2 डॉट्स आ जाएंगी, रहेंगी इसी रीजन में लेकिन ए की तरफ. इससे होगा क्या? ये ए और बी. अब ए के अंदर से शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ए और बी के बीच में जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ए की तरफ अट्रैक्ट होगा. देन ए विल अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड बी विल अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ए. इफ आई से electronegativity B is greater than electronegativity of A, then what will happen? Then the shared pair of electron will displace more towards B. B की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन B की तरफ चल जाएंगे शेयर रीजन वाले. Then in same way B will acquire partial negative charge, A will acquire partial positive charge. So this is electronegativity, means tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एनी एलिमेंट is inversely proportional to atomic radius. So as you move down the group, atomic radius will increase, so electronegativity will decrease. Variation down the group, variation of electronegativity. जब आप करते हैं डाउन द ग्रुप, as you move down the group, atomic radius will increase, so electronegativity will decrease. And as you move across the period from left to right, atomic radius will decrease, so electronegativity will increase. And this is all about electronegativity. Now there are two small topics. One is diagonal relationship and second is formula finding of binary compounds. Next topic is diagonal relationship. What is diagonal relationship? आप डायगोनल के बारे में जानते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं डायगोनल के बारे में. सो क्या है डायगोनल रिलेशनशिप? Some elements of second period show similar properties with those elements of third period which are present at diagonal to them
in the modern periodic table. सो मॉडर्न पीरियड टेबल में कुछ एलिमेंट्स जो सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट से मैच करते हैं जो उनके डायगोनल पे हैं. दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. अब कैसे एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सेकंड पीरियड. उसमें एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. और थर्ड पीरियड है उसमें है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Then we observe that the lithium is having similar properties with that of magnesium. Same way say beryllium and aluminium, they show diagonal relationship, their properties are similar. Same way say boron and silicon. So the lithium, magnesium, they are having similar properties. Beryllium, aluminum, they are having similar properties. Boron and silicon, they are having similar properties, and this is called diagonal relationship. अब एक क्वेश्चन आता है why they are having the similar properties although they belongs to the different groups. जबकि मॉडर्न पीरियड में ये कहा गया है कि the elements belonging to same group show similar properties. तो ये तो different groups के, तो इनकी properties similar कैसे है. So अब इसको एक एग्जांपल से देखिए. As we move from lithium to sodium, atomic radius will decrease. Atomic radius increase. As we move from lithium to beryllium, atomic radius will decrease. But we move from beryllium to magnesium, atomic radius again increase. So होगा क्या कि यहाँ पर ग्रुप में और पीरियड पे दो प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, अपोजिट बिहेवियर शो करती हैं. जैसे एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज, पीरियड में डिक्रीज. सो जब हम डायगोनल चलेंगे देन दीज प्रॉपर्टीज विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड दैट्स व्हाई दे विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज. क्योंकि जो चीज ग्रुप में इंक्रीज है दूसरी साइड डिक्रीज है, तो दूसरी साइड ग्रुप में देखेंगे तो वहां पर वो चीज नलीफाई हो जाएगी, इफेक्ट दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. सो that's why they will cancel the effect of each other, and therefore the properties of lithium and magnesium, beryllium and aluminium, boron and silicon, they will become similar, and this is called diagonal relationship. Last topic of this chapter, next is formula finding. This is the last topic. Formula finding of binary compounds. So what are binary compounds? As the name indicates, binary means bi means two. So the compounds which are made up of atoms of two elements, they are called the binary compounds. Only two elements. For example, H2S, NH3, CO2. ठीक है, NH3 है, so it is made up of two elements, nitrogen and hydrogen. H2S, it is made up of atoms of two elements, hydrogen, sulfur. H2, hydrogen, oxygen. CH4, carbon, hydrogen. So these are called the binary compounds. H2SO4, this is not binary because it is made up of three elements, atoms of three elements, hydrogen, sulfur, and oxygen. So the compounds which are made up of atoms of only two elements, they are called binary compounds. And how can we find out the formula of binary compounds? For formula of binary compounds, we have to know about the valency, and you have studied about valency in my previous video of this chapter. You can see that video and you can get knowledge about the valency and how to find out the valency. Now, some example. Suppose we have to find out the formula of binary compounds of, suppose कीजिए हमें आ गया magnesium and chlorine. So first of all we write the symbol magnesium, chlorine. After that we will write the valency. We know valency of magnesium is 2, valency of chlorine is 1. Then cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Mg के नीचे 1 आ जाएगा, Cl के नीचे 2, 1 को छोड़ दीजिए, सो MgCl2. दिस इज द फार्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड. इस तरह से चलना है. सेकंड,
Suppose we have to find out the formula of binary compound of aluminium and oxygen. Write down the symbol of aluminium Al, oxygen O. Next is valency. Valency of aluminium is 3, oxygen 2. Cross multiply. So Al के नीचे क्या आएगा 2 और के नीचे 3. So the formula of binary compound made up of aluminium and oxygen is Al2O3. Next example. Suppose we have been given that there is an element X whose valence is 4 and second is fluorine. Now we will write the symbol X fluorine F. Next valency H की valency 4 है, fluorine की 1, cross multiply किया तो H के नीचे 1, F के नीचे 4. So XF4, this is the formula of binary compound. One more example. We have to find out the formula of binary compound made up of magnesium and oxygen. First you write down the symbol magnesium Mg, oxygen O, valency 2, 2, cross multiply. So Mg के नीचे 2, O के नीचे 2, 2 से 2 cancel. So the formula is MgO. So this is the formula of binary compound made up of magnesium and oxygen. And this is all about formula finding of binary compounds. And this is all about this chapter. Our chapter 3 is complete. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.